जो भी मेरे आसपास के लोग थे, मेरे परिवार वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे मम्मी पापा के ऑफिस वाले, उन सबको मुझसे दिक्कत होने लगी। आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, यू कांट बिहेव लाइक गर्ल्स, यू कांट प्ले विद बार्बी डॉल्स। जब कांस्टेंट बुलिंग होना शुरू हुआ फ्रॉम एवरी कॉर्नर, from my relatives, from my school friends, from my parents of my school friends, then my mother and my father, their colleagues in the office. So I started feeling, okay, maybe शायद ये लोग सब गलत तो नहीं हो सकते ना, कुछ तो शायद मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। बच्चे के जिस्म के अंदर एक वॉर चल रही होती है, जिस्म मतलब फ्रॉम हेड टू टो देयर इज अ वॉर, and that child is fighting that war. The child is going through a lot of turmoil within the body. Just because your child is different, please, I would say, do not discard them. Every child deserves to be loved. Every child deserves to be respected. Every child deserves that care, from the parents. मेरी हाथ जोड़ के सारे माता पिताओं से गुजारिश है, प्लीज अपने बच्चों का साथ दीजिए, उनको अकेला मत छोड़िए, उनका हौसला बढ़ाइए। आप उनकी शक्ति हो, आप उनकी पावर हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो। सो इट इज, आई थिंक, अगर ऊपर वाले ने मेरे को जन्म दिया है, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, आपके माँ बाप ने दिया, अगर आपको जीने का हक है तो मुझे भी उतना ही हक है। तो शाइनी को बस मैं फटाफट बुलाती हूँ और शुरू करते हैं उनसे एक गुफ्तगू। शाइनी, मैंने आपको इनवाइट भेज दिया है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हाय, व्हाट्स अप? वेरी नाइस, कैसे हो? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप बताएं कैसे हैं आप? बहुत अच्छी है, बहुत टाइम के बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। सेम हियर मैम, यू लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस एज ऑलवेज। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस फॉर 2020 मैम। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी कि कई बार ऐसा होता है, हम सबकी जिंदगी में होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो किसी को नजर नहीं आता। और यहीं से मुझे लगता है कि शायद कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि आखिर चल क्या रहा है हम सबकी लाइफ में। और ऐसा मतलब बहुत सारे लोग होते होंगे। तो शाइनी, तुम्हारे साथ हुआ ऐसा? मैम हुआ है, बट आई थिंक सब मेरे हिसाब से सब कोई, एवरी ह्यूमन बीइंग गोज थ्रू दैट फेज ऑफ लाइफ जहां आपको कई बार पता नहीं होता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड आप समझ नहीं पाते उस चीज को। एंड आई थिंक हम सब इस चीज से मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर मैं शाइनी की लाइफ में पूछूं कि कौन सी एज थी जब हम ये समझने लगते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो दूसरों से अलग है, तो वो कौन सी एज में समझ में आता है? मैम, मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अलग है, बट थोड़ी अलग इसलिए है कि मैं बचपन से ही, आप मतलब लगाएं कि जब मुझे होश आया था 3-4-5 साल की उम्र से ही, मुझे हमेशा से लगता था दैट मैं अपनी मदर को देखती थी घर में। माई मदर वॉज माई आइडल, शी वॉज माई इंस्पिरेशन। सो आई यूज्ड टू लुक एट हर एंड आई यूज्ड टू फील दैट आई एम हर शैडो. So for me, I was always a woman. I always a woman that I saw, like, what I used to see in my mother's face. So in my mother's complete appearance. So I used to relate to her. So for me, it was always like that until then there's a certain age that came, which was about, let's say, 9-10 year old, when people started to get, जो भी मेरे आसपास के लोग थे, मेरे परिवार वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे मम्मी पापा के ऑफिस वाले, उन सबको मुझसे दिक्कत होने लगी। किस लिए? बिकॉज एक जब बच्चा छोटा होता है, 6-7-8 साल की उम्र तक भी अगर वो थोड़ा फेमिनिन हो, थोड़े से हम लोग हिंदुस्तानी परिवार में, आई थिंक आई हैव सीन almost everybody, all my male friends, female friends, all my male friends have worn frocks in their childhood. तो मतलब अगर उस एज तक बच्चा अगर थोड़ा बहुत फेमिनिन हो तो चल जाता है, बट जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है 10 साल 11 साल की उम्र में, अगर तब उसकी फेमिनिन चीजें रहती हैं या फेमिनिन बिहेवियर रहता है, तब आसपास वाले लोगों को थोड़ा ऑफेंसिव लगता है वो।
तो मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई। तो मुझे तो हमेशा लगता था दैट आई एम अ वुमन, यू नो, आई एम born as a woman, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नहीं पता था एज अ चाइल्ड व्हाट आर जेनाइटल्स, व्हाट आर व्हाट इज जेंडर बेसिकली। तो मेरे को ये लगता था, मैं तो मुझे लगता था मैं अपनी माँ की परछाई हूँ। तो जब एक ऐसी एज आई जब लोगों ने दे स्टार्टेड गेटिंग ऑफेंडेड, दे स्टार्टेड सेइंग दैट ओके आप यू आर अ बॉय, आप ऐसी आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, यू कांट behave like girls, you can't play with Barbie dolls, you can't have only girls, आपको आपके भाई हैं घर में, उनके साथ जाके क्रिकेट खेलना चाहिए, आप अपने अपने आप को मेल इन्फ्लुएंस में रखो। सो ये सब चीजें जब मेरे पास लोगों ने बोलना शुरू किया, मेरे मम्मी पापा को बोलना शुरू किया, मम्मी पापा ने मुझे बोलना शुरू किया, तब मुझे लगा कि हाँ कि ओके, उस टाइम भी मुझे इनिशियली लगता था कि व्हाई पीपल आर सेइंग दैट, उनको क्या पता मैं कौन हूँ, वो कैसे बोल सकते हैं। तो as a child also I was so innocent that I did not realize the fact that what people were saying, but at the same time जब constant bullying होना शुरू हुआ from every corner, from my relatives, from my school friends, from my parents of my school friends, then my mother and my father, their colleagues in the office, so I started feeling okay, maybe शायद ये लोग सब गलत तो नहीं हो सकते ना, कुछ तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। तो काफी लोगों ने बोला कि यू मस्ट कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। तो मैंने कहा चलो चलते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास। मम्मा एज अ चाइल्ड रिफ्यूज, यू कांट रिफ्यूज। तो मैंने मम्मा को बोला कि मुझे लेके जाओ साइकियाट्रिस्ट के पास, इफ यू थिंक दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग लेट्स फिक्स इट। सो आई वेंट टू द साइकियाट्रिस्ट एंड very unfortunately my psychiatrist was really bad, really bad in the sense कि मेरा उनके साथ सेशन ना 1-on-1 होता था। वहां पे मेरे पेरेंट्स बाहर बैठते थे, मतलब मेरे को अलाउड, किसी को अलाउड नहीं था कि वहां पे कोई आए। तो वो मुझसे कुछ सवाल ऐसे पूछते थे, पर्सनल सवाल पूछते थे, जो जिसका अगर आंसर मैंने नहीं दिया या कुछ गलत आंसर दिया या कुछ फेमिनिन बिहेव किया, तो ही यूज्ड टू पिंच मी, and it was so horrible as a child, to go through all that. Somebody, a psychiatrist, for me he was a doctor. डॉक्टर का, हम लोग डॉक्टर पे पूरा अंधविश्वास के साथ जाते हैं, we go there to seek help, and when he pinched me I realized that okay, this is something wrong, and when I came and told my parents, they thought that I'm trying to run away. So it was a very tricky situation for me, where I didn't know where to go and from whom to ask for help. Then I asked one of my best friends. I told him that this is what is happening with me. So he said, I'm going to accompany you to the next session. So when he came and he tried to bully me, that psychiatrist, so he kind of stood by me, and then he told my parents that this is something wrong, you're doing something wrong and it is going to affect her on a longer run. But again वो एक दौर था जहाँ पे I also thought maybe a psychiatrist can help me, और मेरे को लगता था कि मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मेरे मेल इन्फ्लुएंस होना चाहिए मेरे आसपास, where I should be hanging around with my cousins, play cricket. मुझसे मेरे को क्रिकेट का बैट हाथ में पकड़ा भी नहीं जाता था मुझसे, मतलब I was so fragile for that matter. But I was always very fond of playing with Barbie dolls. I was very fond of playing with my girlfriends around my house. So so there was this constant turmoil which was going through in my head as a child. मतलब एक बच्चे को आप सोचे, मतलब 13-14 साल की उम्र के बच्चे, जब आप you actually start getting your puberty, you start becoming a little mature, and उस एज में आपका मतलब इतना कुछ आपके दिमाग में हो रहा है, आप खुद की बॉडी समझ नहीं पा रहे, आपके अंदर क्या फीलिंग्स हो रही हैं, बाहर वाले कुछ और बोल रहे हैं, पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं, आपको सब कुछ सुनना भी है, बैलेंस भी करना है. सो इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट टाइम दैट टाइम. बट लेकिन इसके साथ साथ शायनी बहुत सारी और चीजें होती हैं, पढ़ाई होती है, करियर होता है, बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, एंड यू हैव टू बी. एंड हमारे टाइम पे भी आई थिंक आई रिमेम्बर you had to be very active in terms of when you talk about extracurricular activities, or because I was the head of art department in my school, so I had a lot of responsibility.
and plus I was in sports as well. I used to play basketball, but again, the whole problem was that it was very difficult for me to seek help or to explain myself to anybody. But I think God was kind, and God had a lot of grace. He had graced me with a lot of wisdom at that age also. When this constant practice of changing myself, for people, as per people, it didn't work on me. I realized that, okay, after 1.5 years, I realized that, I tried whatever they wanted me to try. But, Yeah. I still feel the same. I feel like a woman. And who are they now to? Then I decided, okay, it is my life. Nobody is going to take that decision for me. It is And what I like am going us, to we do. also like us thinking like that, na? It's, of course, it's my life. Yeah, it is. And plus, I was like, okay, it is something that, after 10 years from now, if I listen to these people, they might not even exist in my life. Then what? Yeah. I need to see what I want from within. I wanted my happiness. I wanted to feel what I feel. And then I realized that, okay, I don't have to really tell people about it. I just have to be myself. I think they will get informed. I don't need help. I think they need to, they will help themselves by accepting the fact that, okay, she is in a, whatever way she has selected or she has chosen for herself. I think it is good for her. So, या but तो क्या शाइनी, ma'am, तो अभी जैसे जो बच्चे हैं अभी भी बहुत सारे घरों में, मतलब एक तो वैसे ही बच्चों को बहुत ज्यादा दबा के रखा जाता है, कहने की बात है, लेकिन बड़ा प्रेशर है बच्चों के ऊपर। तो उन ma'am, बच्चों के पेरेंट्स को क्या कहोगे आप? मैं सी मैम, बहुत 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 जरूरी होता है, आई थिंक किसी भी ट्रांस चाइल्ड के पेरेंट्स का उसको प्यार करना, उसका साथ देना, उसको सपोर्ट करना। बिकॉज मैम, आई डोंट नो हाउ टू रियली एक्सप्रेस इट, बट एक बच्चे के जिस्म के अंदर एक वॉर चल रही होती है। जिस्म मतलब फ्रॉम हेड टू टो देयर इज अ वॉर, and that child is fighting that war. The child is going through a lot of turmoil within the body. And imagine, with that turmoil, they have to go through the turmoil which is in the outer world. So, for a parent, I would suggest any parent, first of all, any child for that matter, be it trans, be it, gay or straight, any child, every Yeah. child deserves the love and the care of the parents that, any parent, for that matter, this is the basic need for a child. And Okay. just because your child is different, please, I would say, do not discard them. Do not feel that, okay, they are not, they have come, we all have come out of you. We all हाँ. have come out of, the same mother. We have all come out of the same father. So, you need to accept your child the way, and let him, her, anyone for that matter, embrace her life or his life. I think that is very important. I think in today's world, and especially, what we have gone through as a human race in last 1.5 years, I think, we should realize the fact that there's nothing more important than the mental health, of your loved ones, of everybody who's connected, within the family. So, that mental health, and हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, वहाँ पे मेंटल हेल्थ को तो वैसे भी बहुत बड़ा टैबू माना जाता है। बिकॉज मेंटल हेल्थ के लिए बोला जाता है कि हाँ, मतलब अगर आप एक साइकाइट्रिस्ट के पास विजिट कर रहे हैं और काउंसलर के पास विजिट कर रहे हैं, तो यू आर मैड। it's taken for granted that, okay, इसका दिमाग खराब है या ये पागल है, तो you are taken for granted that, okay, but that's not really the case. Understand your child. Your child has come out of you. It's a part of you. So you need to comfort your child, and that is exactly, trust me, ma'am, I have seen people, I have friends who, their parents, if your parents support you, you can win any war outside. You can win anything. की बात है, एंड यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, कि अगर घर में सपोर्ट मिल रहा है तो आप बाहर आप जीत सकते हो। तो जब आप घर, आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, आपकी फैमिली आपका एक क्या कहेंगे, ढाल बन जाती है कि कोई भी आपको आके, anybody who tries to attack you, you just go ahead and just fight that war and fight that odd
situation and come out victorious. And I think every child, at least this is the minimum a child deserves, because if you have brought a child to this world, every Very right. child deserves to be loved. Every Yeah. child deserves to be respected. Every child deserves that care, from the parents. So I think as मेरी हाथ जोड़ के सारे माता पिताओं से गुजारिश है, प्लीज अपने बच्चों का साथ दीजिए, उनको अकेला मत छोड़िए, उनका हौसला बढ़ाइए. आप उनकी शक्ति हो, आप उनकी पावर हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो. तो अगर आप उनके साथ हो, पूरी दुनिया से वो लड़ जाएगा आपका बच्चा. तो इसको, इस बात को प्लीज ध्यान रखें. तो शाइनी, अभी लाइफ जब आपने 2020 ट्रांसक्वीन को विन किया, तो लाइफ फिर कितनी बदली? मैम, पहली बात तो मैं अगेन आई वुड से दैट माय स्टोरी इज अ लिटिल डिफरेंट थिंग. बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में नहीं पता था. There were very few people who knew about me, that I am a trans girl. Not the fact that I didn't want to talk about it. It was just that I was too busy making my career. I was too busy, paying more attention to my, to make myself more strong in terms of finance, economically, physically, mentally, everywhere. Like, whatever way possible, I wanted to make myself strong, because, at a very early age, I left my house. By the way, I left my house when I was 17-year-old. I left, not that I was thrown out. My parents did not ask me to leave. I left because I could see that my parents were getting bullied. My parents were getting constantly, they were getting harassed by, my relatives around, their colleagues, everybody. So I thought it is not something that they are going to deal with. I think it is my fight, my decisions in life, and it is something that I want for myself. So it is going to be my journey, and I will, do it alone. I will do it, maybe, that gave me a lot of strength when I moved out of my house, and I started my journey. It gave me a lot of strength, and it gave me a lot of power, a lot of courage to, accept my own self. I do not look for acceptance from people. It was very important for me to accept my own self, because if I can't accept myself, I can't. First of all, I do not ask for acceptance from anybody, because, when you ask for acceptance from anyone, you put the other person on a higher pedestal. And for me, we all are equal. We are all born equal. We all are, what rights you have, I have exactly equal amount of right as a human. So nobody can grant me a life that I want to live. So it is, I think, अगर ऊपर वाले ने मेरे को जन्म दिया है, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, आपके माँ बाप ने दिया, अगर आपको जीने का हक है तो मुझे भी उतना ही हक है. तो आप मेरे को कोई राइट ग्रांट नहीं कर सकते मेरे हिसाब से. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, बहुत मतलब इनिशियल स्ट्रगल जो थे, उन सब ने मेरे को इतना स्ट्रांग बनाया, इतना इतनी हिम्मत दी कि मैंने ऐसा मुकाम हासिल किया अपनी जिंदगी में, जहाँ पे मैं बस ब्लाइंडली काम करती रही. तो मैंने इस बात पे तवज्जो ही नहीं दिया कभी जिंदगी में कि मैं अपने बारे में लोगों को बताऊं या अपनी स्टोरी शेयर करूं. एंड ऑल्सो ma'am, there was this little pressure from my family, where my family was not really comfortable about me talking about myself. बट लास्ट ईयर पैंडेमिक के बीच में हम लोग बैठे हुए थे, घर पे थे, तो बहुत सोचने का वक्त मिला, बहुत बहुत गौर किया इस बात पे. तो रीना राय, आपको पता है, जो मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की फाउंडर हैं, तो शी हैज बीन वेरी क्लोज टू मी. आपको पता है, मैं आपसे पहली मिस ट्रांसक्वीन इंडिया के शो में भी मिली थी. तो रीना का फोन आया मेरे पास. रीना ने कहा कि शैनी, मुझे इस बार शो करना है, बट मुझे लगता नहीं है पॉसिबिलिटी है. तो मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव जाती है, जो मिस इंटरनेशनल क्वीन के लिए, वो ट्रांसक्वीन इंडिया से जाती है. तो उसने कहा कि आई वांट समबडी वेरी स्ट्रांग टू गो. एंड जब लास्ट टाइम वो मिस इंटरनेशनल क्वीन के लिए गई थी, वहां से भी उन्होंने मुझे फोन करके बोला था, शैनी, मैं तुम्हारे को लेके आऊंगी यहाँ पे. तो मेरे को, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूजुअली प्रिपेयर करती हूँ इन लड़कियों को वहां जाने के लिए. तो बिकॉज मैम, आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ in open because of my family pressure and my personal issues. So when I think, जब मुझे बहुत वक्त मिला इस
पैंडमिक के बीच में, लॉकडाउन के बीच में मेरी कॉन्स्टेंटली रीना से बात होती थी। आकाश अग्रवाल हैं जो हमारे पैनल पे हैं, ही इज अ LGBTQIA+ राइट्स एक्टिविस्ट एंड ही इज अ ज्वेलरी डिजाइनर, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। डॉक्टर वरुण कट्याल हैं। तो इन लोगों ने मेरे से जब बात की, उन्होंने कहा कि आई थिंक शी नीड्स हाई टाइम, आई थिंक यू शुड take the title, you should claim the title for yourself. Then I also thought that I think high time, I have achieved a lot in my life, with God's grace, and I think it's time for me to speak. Why? Because I think it will give a lot of young kids a lot of strength. It can give them hope, because I came across a lot of trans girls, a lot of trans men. They kind of lost their hope. They feel that, okay, हमारी जिंदगी में क्या होगा आगे, हमें नहीं पता। शायद हम पढ़ाई भी कर पाएंगे, शायद हमारा कोई करियर भी बन पाएगा, बिकॉज मैम एवरीबडी इज नॉट वेरी स्ट्रांग। हमें मतलब हर तरह के लोग होते हैं, सबके अंदर शायद इतनी शक्ति नहीं होती है, इतनी पावर नहीं होती कि वो सब चीजें झेलें, बट दैट डजंट मेक देम वीक। एट द सेम पॉइंट इट जस्ट मेक्स देम वल्नरेबल, बिकॉज वो उनकी वल्नरेबिलिटी उनको इतना कमजोर करती है उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए कि वो अपनी दे गेट कंफ्यूज कि वो क्या करेंगे, और वो डर जाते हैं। एंड वो डर जो है इंसान का, वो इंसान को बहुत it can take you to depression, it can take you to anxiety issue, it can cause many problems. So I thought that if I start talking about myself, I think it will help a lot of people. It will give a ray of hope to a lot of young trans kids to look up to life in a brighter way. There's always a silver lining to the dark side. So I thought that it's high time that I need to speak at least, and if my story can inspire or can change one person, anybody's life for that matter, even one life, I think my purpose of talking about myself would be completed. Like I'll meet my purpose. So when Reena came and we decided to do the coronation, which happened on the 20th of December 2020, I started talking, and the moment this is a very interesting thing I have to tell you, this incident. I was really scared because मैंने कभी अपने सोशल मीडिया में नहीं डाला था, कहीं नहीं। पर जैसे ही मेरी क्राउनिंग हुई, मैंने सबसे पहले अपने सारे सोशल मीडियाज में डाला। मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और मैं थोड़ा सा डर रही थी, अंदर से डर रही थी इसलिए बिकॉज हम एक ऐसे वी आर in such a complex society, in such a complex world where people tend to judge you. They will instantly forget about how my work has been, what kind of struggle I've done. They instantly start picking up on, oh you are this, oh you're a trans. So that was there, that little threat was there. I'm being very honest, and मैं बहुत ही अपने दिल से बात बता रही हूँ आपको। तो जब वो बात मतलब मैंने अपना सोशल मीडिया सारे स्टेटस जब बदले, मैं अगले दिन, क्राउनिंग के अगले दिन, मैं बहुत थकी हुई थी, बहुत पार्टी की थी हमने रात में। तो मैं रात को मतलब लेट सोई थी, तो मैं दोपहर में 12-1 बजे तक सो रही थी। तो मेरे को रीना मैम का फोन आया। रीना शी टोल्ड मी लाइक, have you checked your social media? I said no. I said I've just woken up. It's like, just go and check your social media. I want you to instantly go and check. And ma'am, trust me, I think it was the most path-breaking event of my life. It just turned the tables around completely for me, because the moment I went on social media, the kind of response, the kind of love, the kind of the receival that I got from people, it was so overwhelming. I can't even express. I have so much of gratitude for God for giving me strength to take this decision in life, that for taking up the title. And it was that moment where I actually realized that it was my fear which was stopping me. People did not judge me because I think वक्त बहुत बदल चुका है, पहले से वक्त बहुत बदल चुका है। जो मेरे वक्त, मतलब जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग जब स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम पे हम लोग बात करते थे इस मुद्दे के बारे में, तो लोग बहुत ही ऑफेंड हो जाते थे, बहुत ही इसको एक टैबू मानते थे। बट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, आप मानेंगे, मेरे स्कूल के लोगों ने,
मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मुझसे टच में आए जिनसे मेरी कम से कम आई थिंक 10 सालों से बात नहीं हो रही थी. मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, मेरे स्कूल ओनर्स, they kept messaging me. My school teachers, they messaged me. They're like, we're so proud of you. We are so happy for you. You know, you made us proud. That feeling. It was such a moment of contentment. It was such a moment of glory for me personally, because I think that moment I realized that uh, I had this major gratitude towards Miss Transqueen India, that it gave me that power, it gave me that strength, and it gave me that respect that I was Yeah. looking for a lot of years. And Right. that love, that acceptance, I would see acceptance was not something that I was looking for, but that acceptance which came surprisingly to me, that particular part, it was so beautiful. That moment was so beautiful, so precious. It's embedded in my head, like like little pearls, which I'm gonna take it forward in my life forever. And I think that gave me so much motivation, that gave me so much of inspiration, that I thought that okay, it is high time that I start being actively involved in any kind of work for my community. And that was really a huge change in my life. And the crown तो crown कभी came with कभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स चलाएं कि स्कूल में जाएं और वहां बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें ताकि बच्चे मैम हम लोग ऑलरेडी आप करते हैं। मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की एक एनजीओ है, मिसेस रीना राय उसको चलाती हैं. उसका नाम है दीपा अर्धनारीश्वर फाउंडेशन. तो उसमें हम करते हैं ये प्रोग्राम. हम लोगों ने इनफैक्ट अभी बिकॉज सब स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद थे, तो हम लोग जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स करते हैं. तो वहां पे हम जाते हैं. मैम इतने स्कूल्स में गए हैं हम लोगों ने अभी ऑनलाइन वर्कशॉप्स ली है. एंड इनफैक्ट हम एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का एक वर्कशॉप ले रहे थे, जिसमें आप मानेंगी नहीं मैम, बच्चे जिनके मतलब जो डरे होते हैं अंदर से, जो अपने बारे में बात नहीं कर पाते, जो अपने बारे में कभी डिस्कस नहीं कर पाते, मैम वो वर्कशॉप के बाद when we share our story, when we tell them, we give them hope that okay, this we are sitting here to help you, we are sitting here to hug you. Ma'am, people come out and they start talking about their life. They start confessing that okay, they start telling about their what they feel from within. And I think it's not just only the people who tell the story or who accept their reality. It is also the people around. They become so sensitive that it is they start accepting their people more lovingly. So I think that is a very beautiful thing, and I think we will continue this thing, this activity, this program that we do, this workshop that we do, will continue in future, because I believe that कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है. तो वही कहीं से तो शुरुआत हो, कहीं से तो. एंड मैम एक और बात पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, जो मुझे लगता था कि और जिस बारे में मैं एक्चुअली अपना प्रोजेक्ट भी बना रही हूँ इंटरनेशनल पैजेंट के लिए, वेयर आई वांट जेंडर एजुकेशन टू बी अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम. व्हाई? बिकॉज मैम व्हाई? बिकॉज आई थॉट, जब मेरे पास ये मौका आया, जब रीना ने बोला दैट when you go and represent India internationally, आपको एक अपना प्रोजेक्ट तैयार करके लेके जाना होता है यहाँ से, कि आपको दिखाना है कि आपने अपनी कंट्री में क्या काम किया है. तो मेरे को लगा, तो रीना ने मुझे बोला कि आप किस चीज पे काम करना चाहोगी. तो शी गेव मी ओपन हैंड. सो वी वर जस्ट सिटिंग एंड डिस्कसिंग, एंड देन आई रियलाइज दैट मेरे को अपनी लाइफ स्टोरी पूरी मैंने अपनी दिमाग में याद करी. आई वेंट बैक एंड आई हैड एवरीथिंग जस्ट फ्लैशिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज. And then I realized that, where the problem starts, where, I wanted to go to the root level. I wanted to go where actually a child, when he's growing or she's growing, the kind of problem that starts is at an age where they are bullied by their classmates, they're bullied by their colleagues, their friends around their, home, or their relatives, anyone for that matter. बट मैम मैंने एक और चीज जो यहाँ पे सेंसिटिवली रियलाइज की कि उनकी भी गलती क्या है.
उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज हमारी हमारी पूरी ह्यूमन स्पीशीज को हमने सिर्फ एक ब्रैकेट में डाल दिया है, मेल और फीमेल के। तो जब उनको बच्चों को जिसको नॉलेज ही नहीं है, तो आप उससे क्या कंप्लेन कर सकते हो कि आपने मुझे क्यों बुली किया, बिकॉज उसके उसको या उसको उसको इस बारे में पता ही नहीं है कि देयर आर को एग्जिस्टिंग जेंडर्स. So या if we actually introduce gender education as a part of school curriculum in textbooks, एब्सोल्युटली, you know, बिल्कुल. it will create much more sensitization. It will create much more awareness. It will create, it'll make people more sensitive towards the whole, community. And for me, it should not be just a community. We all are a community as a human. So that should be the focus, I think, and that should come, it should come at a early stage, where I think when people are studying, when people are, in the school, जब एक छोटे छोटे से ही कहते हैं ना, you foster the values at from a very young age. So you need यस. to foster these values from a very young age, so that the coming generations can be, the similar things can be carried forward for the coming generation. And वही है ना मैम, अभी से ये एक मुहिम शुरू होगी, तो आगे वाले फ्यूचर, आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत आसानी होगी, उनके लिए बहुत, उनको एक, एक एक ऐसा स्पेस मिलेगा अपने स्कूलिंग में, जहाँ पे उनको अपनी सेक्सुअलिटी एक प्रेशर नहीं लगेगी अपने ऊपर, और वेरी ना ही नाइस. ना ही दूसरे बच्चे उनके ऊपर कुछ किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे. बस एक चीज और पूछी शैनी, यू डू अ लॉट ऑफ टेड टॉक्स, तो वहां पे लोग सवाल क्या पूछते हैं? मतलब आपने अपनी बात बता दी, बट मोस्ट कॉमन जो उनके क्वेश्चंस होते हैं मैम वो क्या मेरे होते मेरे मेरे अभी तक जो टेड टॉक हुए हैं, वो ऑनलाइन टेड टॉक हुए हैं, वहां पे मुझसे किसी ने सवाल नहीं पूछा, बट हाँ, डेफिनेटली फीडबैक जरूर आता है कि मतलब काफी सारे ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, जहाँ पे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, डीएम्स किए, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप किया है, फेसबुक पे लिखा है, दैट यू नो it's just that sometimes only your life story, only just very plain simple life story can actually inspire a lot of people. It can give courage to a lot of people. So I've received messages like that, where a lot of not just from the LGBTQI plus community, but other people also, for that matter, they've messaged me that some way they feel inspired, because अब वो कहते हैं ना, कितने सारे ऑड्स के बाद भी मेरे को मुस्कुराना हमेशा पसंद है. आई लाइक टू स्माइल, आई लाइक टू ओनली स्प्रेड हैप्पीनेस. आई हैव नो grudges, I have no drift for anybody. I always like to smile. So and जो स्ट्रगल रहा है वो जिंदगी का, आई थिंक वो स्ट्रगल भी इतना खूबसूरत रहा है कि मेरे को वो स्ट्रगल लगा ही नहीं. मुझे वो लगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड आई एम सपोज टू, देयर इज अ ड्यूटी दैट वी ऑल एज अ ह्यूमन बीइंग, वी आर बोर्न टू play our character, play our role, and I feel that my बिकॉज role is so आफ्टर special. लाइफ इज ब्यूटिफुल, आई थिंक वही मुझे लगा कि नाउ मेरे लाइफ को इज मैम, ब्यूटिफुल. मेरे को कोई पूछा ना, आप सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है, मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जीना. आई लाइक लिविंग टू द फुलेस्ट. एंड आई थिंक जो इतना खूबसूरत तोहफा हमें हमारे माँ बाप ने, ऊपर वाले ने दिया है, जो जिंदगी है, और आई थिंक मैं पिछले 1-1.5 साल में तो इस चीज को बहुत ही प्रेशियस मानती हूँ. आई थिंक हमारी जिंदगी हमारा सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती तोहफा है, और उसको जीना, उसको सही तरीके से जीना, उसको अपने तरीके से जीना, उसको खुले दिल से जीना, आई थिंक वो सबको सीखना चाहिए. एंड आई थिंक मैं उसी चीज में बिलीव करती हूँ कि जब तक मेरा अल्टीमेट गोल है जिंदगी का, मेरे लिए, आज भी मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा, एक इंटरव्यू हो रहा था मेरा टेलीफोनिक, उन्होंने मुझसे पूछा आपके लिए सक्सेस क्या है. मैंने उनको भी यही बोला, मेरे लिए सक्सेस वो है जब मैं खुश होती हूँ सबसे ज्यादा, बिकॉज आई थिंक वो खुशी, दैट कंटेंटमेंट, दैट smile that comes from my heart, I think that is my success, because I'm successful to achieve one of the biggest dreams that a lot of people cannot. So वेरी I always say that the ultimate goal of life is happiness. Some people, and people have different way of receiving their happiness. So I think for me, happiness is something that जब मैं अपनी, जो मेरे लिए रोज है कि मैं अपनी जिंदगी खुले दिल से जीऊं, एकदम एक जज्बे के साथ जीऊं और अपने ड्रीम्स के लिए जीऊं, तो वो मेरे लिए आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
वेरी नाइस एंड कीप इट अप एंड सी यू Thank you, सून ma'am. विद न्यू आइडियाज और आप लोग ऐसे करते रहो यू एंड रीना एंड सो मेनी पीपल सब लोग Thank you और so हम much, सब ma'am. ये जो भी तो साथ में भी are, मतलब आपके लिए हैं हम सब Thank you so much. You have been with us since the start, since the beginning, and I think it is very important for everybody to, appreciate even a small effort that someone makes. I think वो छोटे छोटे efforts भी है ना वो इकट्ठा कर देंगे ना तो बहुत changes आ जाते हैं जिंदगी में. I think बिल्कुल वो ये छोटे एक हमारा छोटा सा लाइव भी पता नहीं किसी की जिंदगी शायद बदल दे या किसी की जिंदगी में कुछ होप ला दे तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक एंड वो अगर ये कुछ ऐसी छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहे तो इट गिव्स अस आल्सो लॉट ऑफ मोटिवेशन इट्स बोथ द वे बिल्कुल it gives us a lot of motivation to keep doing it and to keep delivering our best and I या think ये बहुत ही मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब हमारे को सोशल मीडिया मिल गया कि जहाँ पे हर किसी को रीच करना है the world has come very close we've become very close to each other so I think that closeness needs to be utilized in the proper way and I think ma'am thank you so much you have been such a wonderful person you've been such an inspiration yourself and thank you for doing this today because it was on a very short notice but then I thought that it is something that I need to do with you. चलो विश यू ऑल द बेस्ट Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Thank you. बाय बाय Bye.